સિસ્ટમના પરિણામ જાહેર થયા હતા. પરિણામ આપણને અનુમાનથી ખૂબ જ સારા આપણને જોવા મળ્યા છે. ખાસ કરીને અગર નફાની વાત કરીએ ત્યાં આપણને 10% ગ્રોથ જોવા મળ્યો છે. ત્યાં જ અગર આવકના ફ્રન્ટ પર નજર કરશું ત્યાં પણ 3.7% ઉછાળો છે. ડોલર આવકના ફ્રન્ટ પર નજર કરીએ ત્યાં લગભગ આપણને $310.9 મિલિયન આવક આપણને આવતી જોવા મળી છે. અને સૌથી અગત્યનું તેના સીસી રેવન્યુ ગ્રોથ જે છે ત્યાં આપણને સારું એવું બાઇંગ જોવા મળ્યું, સારો એવો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. 3.10% QOQ ધોરણે આપણને સીસી રેવન્યુ ગ્રોથ આપણને જોવા મળ્યું છે. પરંતુ હવે આપણી સાથે પર્સિસ્ટન્ટ સિસ્ટમના ચીફ ઓફિસર सुनील सप्रे अपनी साथ जोड़ाई गया है. गुड मॉर्निंग सर. सर रिजल्ट्स की अगर बात करें तो अनुमान से अच्छे परिणाम हमें देखने मिले हैं, पर अगर हम जानते हैं कि वित्त वर्ष यानी कि FY24 में काफ़ी अच्छा नहीं रहा पूरी इंडस्ट्रीज़ के लिए, पर हमने इसके पहले भी मंदी के माहौल देखे हैं, तो उसके ऊपर आपकी क्या आप चर्चा विचारणा कर रहे हैं और आपको क्या लग रहा है कि FY24 और ख़ास करके Q4 के रिजल्ट्स कैसे निकले हैं? एक ब्रॉड लेवल पे आप देखेंगे तो FY24 एक volatile ईयर था, right? As we started FY24, there was recessionary kind of environment. Whether it will be hard landing, soft landing was the type of discussion that was going on. The inflation, interest rates, they remained elevated for almost the whole of FY24, and even now we don't have any indication that inflation is giving up. Central banks उम्मीद तो रख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, लेकिन कर नहीं रहे हैं. So because of that, there is a sentiment impact on BFSI particularly. लेकिन हमारा जो Persistent का presence है in the market, our biggest market is US, which continues to grow strong for us. Of course, there are headwinds because of which the overall growth has slowed down. But even then, without any acquisition, we have done organic growth of 14.5%. So to that extent, we are pleased with the way in which we are able to access the market opportunities. अगर sectors आप देखेंगे तो उसमें healthcare life sciences has been strong for us, followed by BFSI. First half was good for even high tech, but in the second half, the high tech has been doing little, you can say slightly weaker than BFSI as well. So for the next 1 or 2 quarters, we expect healthcare, followed by BFSI, followed by high tech as the way in which the verticals seem to be positioned to grow. And rahi baat the way TCV, ACV wins are there, आप देखेंगे तो TCV, ACV wins continue to show healthy trend of growth, and we have a very good pipeline as well to work on. सर सेकंड क्वेश्चन मेरा रहेगा कि डील सिचुएशन जो है उसको लेकर उसका पूरा इम्पैक्ट मार्जिन पर कैसे देखने मिल रहा है? So Q4 में अगर आप देखेंगे तो Q3 के मुकाबले डेफिनेटली TCV, ACV कम रहता है, क्योंकि Q3 is the last quarter in the calendar year. So most of the renewals get included in Q3, because of which the comparison has to be made of this Q4 to last year's Q4. Seasonal basis पे आप देखेंगे तो compared to last year's Q4, we have done good in this Q4 as well. And last 2-3 quarters अगर आप देखेंगे तो हमारे deal wins में 2 टाइप के deals आपको नजर आएंगे. एक तो carve out deals हैं कि जहाँ पे हम complete greenfield IT provide कर रहे हैं managed services की format में. और दूसरा हमने 2-3 डील्स लार्ज डील्स अनाउंस किए थे. एक हेल्थ केयर में है, दूसरा BFSI में है, और बाकी स्लाइटली स्मॉलर डील्स अक्रॉस ऑल द वर्टिकल्स इंक्लूडिंग हाईटेक. द ओनली थिंग दैट हैज हैपेंड इज, आप पूछेंगे अबाउट मार्जिन्स, हाउ दे हैव पैन्ड आउट, बट दैट इज द रीजन व्हाई व्हेन द ऑन-साइट लेड ग्रोथ हैपेंड ड्यूरिंग दिस लास्ट 2 quarters, the increase in subcontracting cost, जो roughly about 11% के level पे था, अभी बढ़ के 14% plus हो गया है. So in the initial phase of the ramp up, where we are doing vendor consolidation kind of work, lot of on-site subcontractors we have onboarded as the immediate phase of growth, I mean the deal materialization. And as these progress from quarter to quarter, the on-site to offshore will provide the margin leverage. And secondly,
what we have done is offshore में हमने आपने देखा होगा अभी थोड़ी मैन पावर ऐड की है, हमारा हेडकाउंट ग्रो हुआ है 500 से। सो इसमें वही प्लान है कि जब हम ऑन साइट टू ऑफशोर प्लानिंग कर रहे हैं, जितना बन सके उतना हम जल्दी कर सकें और मार्जिन इंप्रूव कर सकें। The other part which is there on the margins is the investments we are making in GenAI, क्योंकि वो भी हम अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं हेल्थ केयर लाइफ साइंसेस में और BFSI में, क्योंकि अभी कंपेयर टू लास्ट 2 quarters where POC work was going on, now slowly there is a little better, I would say, clarity, line of sight of what work we can deliver to the clients in form of GenAI. And the first opportunity there is in the area of data work, data related work, क्योंकि अगर आपका डेटा स्ट्रांग होगा, क्लीन होगा, तो आप उसको ज़्यादा बेटर तरीके से GenAI टूल्स यूज कर सकते हैं। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि FY25 के लिए क्या गाइडेंस को लेकर आप चल रहे हैं? सो FY25 अगर आप देखेंगे FY23 की ऑर्डर विन्स क्वार्टर बाय क्वार्टर और FY24 की ऑर्डर विन्स क्वार्टर बाय क्वार्टर, तो आपको दिखेगा कि ऑर्डर बुकिंग का ट्रेंड काफी हेल्दी है। While the market continues to remain, the headwinds are there, it is not very easy to win the orders, get the customers to ensure that the ramp up happens on time. So ये headwinds है revenue के लिए, लेकिन we are entering FY25 with a healthy order backlog and also a very good pipeline. So we are confident we'll continue to do well. और अगर आपने देखा होगा कि हमारा जो FY24 का revenue growth है 14.5%, वो completely organic growth है. We did not have any acquisition also during FY24. So we are pretty optimistic that there is a market opportunity which we can go and address and grab. थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने बदल, और काफ़ी डिटेल्स में आपने कंपनी के आउटलुक के और अर्निंग्स पे डिस्कशन किया, एंड ऑल द बेस्ट सर नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। इस साथ